Welcome to my channel Solve Chemistry. Today we discuss about the part 2 of the numericals question and answer of thermodynamics. Today we discuss about some numericals of thermodynamics. Some formula is written here, and in this formula basis some different types of question we solved in today class. पहला फॉर्मूला जो है डेल एस फ्यूज और एंट्रोपी चेंज ऑफ फ्यूजन इक्वल्स टू डेल एच फ्यूज by temperature at melting point. Of the second formula is entropy change of vaporization equals to del H vaporization by temperature at boiling point. Del H vaporization mean enthalpy change of vaporization. Then the number third formula is del S or entropy change in sublimation equals to del Hs by temperature. When temperature of a melting point of water, when water is in the form of melting, when ice is solid, then when water freezes at 0 degree Celsius, when water boiled at 100 degree Celsius, पर उसके लिए temperature at melting point 273 Kelvin, temperature at boiling point 373 Kelvin. The next formula is del G equals to del H minus T del S. Del G equals to change in Gibbs free energy का formula del H minus T del S. Next formula is the bond energy of जो order का जो order bond energy order का जो change in enthalpy का formula summation of bond energy of reactant minus summation of bond energy of product. The next formula is del G naught equals to minus NF E naught. Del G naught is the standard Gibbs free energy. उसका रिलेशनशिप के लिए हम नेक्स्ट फार्मूला ऑल्सो डेल जी नॉट का जो फार्मूला है उस फार्मूला इज माइनस 2.303 RT log K इक्विवेलेंट. इस फार्मूला को हम दूसरा टाइप से ऑल्सो लिख पाएंगे. कैसे? del G comparing between equation 6 and 7 minus NF E naught equals to minus 2.303 RT log K equivalent. Minus plus. Now we write here E naught cell equals to after calculation we put the value of R, put the value of T. Finally we get here minus 0.059 by N log K equivalent. Here we get this from comparing between equation 6 and 7. Now we say about difference between del S and del G. When del S equals to positive, here we get the spontaneous. When del S equals to negative, we get non-spontaneous. When del S equals to 0, we get the equilibrium condition. But when del G equals to positive, here non-spontaneous cases are arises. Non-spontaneous के लिए the reaction is not feasible. Here reaction feasible नहीं होगा. When del G equals to negative, here the reaction is spontaneous. Here it is feasible. For spontaneous के लिए feasible, for non-spontaneous के लिए not feasible. When del G equals to 0, here also the equilibrium case is arises. Few formula of this class we discuss few formula, then next formula का apply we discuss in next class. Now we discuss few question and answer of this formula. पहला जो क्वेश्चन है, calculate enthalpy formation of benzene from the following data. Equation 1 is C plus O2 gives rise to CO2 plus 393 kilojoule. Equation 2 is H2 plus half O2 gives rise to H2O plus 286 kilojoule. Equation 3 is C6H6 plus 15/2 O2 gives rise to 6 CO2 plus 3 H2O
plus 3150 kilojoule. This question we this question we solved by the method of Hess's law. Hess's law में हम क्या पढ़ रहे हो? उस लॉ में इक्वेशन 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद हम बैलेंसिंग मेथड के साथ सॉल्व करने के बाद हम जो चेंज इन एंथैल्पी का जो आंसर हम फाइनली स्टेप में कैलकुलेट कर सकते हैं। उस मेथड्स में हम इस क्वेश्चन को करेंगे। आंसर राइट हियर इन इक्वेशन थर्ड जो CO2 का कोएफिशिएंट क्या है 6। सो इन इक्वेशन 1 वी मल्टीप्लाइड बाय 6 फॉर इक्वेशन 3 के साथ हम बैलेंसिंग करने। नाउ वी राइट इक्वेशन 2 H2 plus half O2 gives rise to H2O plus 286. Now we see the equation third. Here H2 का कोएफिशिएंट क्या है 3, इसके लिए हम 3 कैलकुलेट करेंगे। here now हम क्या पाएंगे 6C plus 6O2 plus 3H2 plus 3/2 O2 gives rise to 6CO2 plus 3H2O plus 393 into 6 plus 286 into 3 हम क्या पाएंगे 3216। now also this equation we write 6C plus 6O2 plus 3H2 plus 3/2O2 3/2O2 plus 6O2 we write here 15/2O2 3H2 gives rise to 6CO2 plus 3H2O plus 3216 kilojoule. Now we multiplied this equation with equation 3. now we write here equation 3 C6H6 plus 15/2 O2 gives rise to 6CO2 plus 3H2O plus 3150 kilojoule. here 6CO2 कट जाएंगे, 3H2 कट जाएंगे and 15/2 O2 15/2 कट जाएंगे। now we write this 6C plus 3H2 हम माइनस लिखेंगे, या माइनस here also minus, then 6C plus 3H2 minus C6H6, then here we get 66 kilojoule. now write this 6C plus 3H2 then 66 kilojoule plus C6H6. finally we get the value of enthalpy of formation is minus 66 kilojoule. it is clear to all of you. In this question we calculated by the method of Hess's law. Hess's law हमको उसका जो स्टेटमेंट क्या था, पहले हम इक्वेशन 3 के साथ और इक्वेशन 2 के साथ जिस इक्वेशन का बैलेंसिंग चाहिए उस हम करने के बाद उसके बाद फाइनली हम डेल एच एफ का वैल्यू पाएंगे। उस टाइप हम कैलकुलेट करेंगे इस टाइप का फॉर्मूला। in this question also we calculated by the method of summation of del H of product minus summation of del H of reactant. in this procedure also we calculated this question. It is clear to all of you. now we discuss the number 2 question of today class. if enthalpy combustion of diamond and graphite are 395 kilojoule and minus 393 kilojoule respectively, calculate enthalpy of transition of ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम डायमंड टू ग्राफाइट। कार्बन का जो 2 फॉर्म है, 1 ग्राफाइट फॉर्म 1 डायमंड फॉर्म, जैसे कि सल्फर का जो 2 फॉर्म है, रॉम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर। इस टाइप का क्वेश्चन जब एग्जाम पे आएंगे उस क्वेश्चन को हम सेम टाइप पे कैलकुलेशन करेंगे। जिस टाइप पे
मैंने अब कैलकुलेट करूँगा। उसका आंसर क्या है, पहले हम लिखेंगे जो कार्बन का दोनों फॉर्म सी डायमंड प्लस O2 CO2, उसका एनर्जी क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, जो एंथैल्पी कंबशन का वैल्यू 395 किलो जूल। नाउ सी ग्राफाइट, कार्बन का ग्राफाइट फॉर्म, देन इसका वैल्यू क्या है -393 किलो जूल। नाउ वी कैलकुलेटिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग बिटवीन बोथ। O2 कट जाएंगे, CO2 कट जाएंगे, माइनस है सी डायमंड minus C graphite, then this value is -2 kilojoule. Finally we get the value of del SC is -2 kilojoule. Also if the question is asked of the monoclinic and rhombic sulfur, the same cases or same type of answer we will done। जैसे हम कार्बन का जो दोनों फॉर्म डायमंड टू ग्राफाइट जैसा, सल्फर का जो रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सेम टाइप, वी कैलकुलेटेड बोथ द क्वेश्चन। वी डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेटेड entropy of fusion of water where enthalpy of fusion of water is 100 kilocalorie per mole। here given क्या है, enthalpy of fusion, del H fuse is given 100 kilocalorie per mole। calculated entropy of fusion, entropy fusion क्या है, del S fuse, del S fuse का फॉर्मूला क्या है, del S fuse equals to del S fuse by temperature at a melting point। here del H fuse is given, the value is given 100 kilocalorie by temperature melting point क्या है 273 Kelvin। here we get the value of del H fuse by applied this formula। we put the formula, get the answer। पहले हम फॉर्मूला पुट करेंगे, उसके बाद हम जो डिफरेंट टर्म्स का उस टर्म्स वी अप्लाइड इन दिस फॉर्मूला, देन फाइनली वी गेट द आंसर। फाइनली we discussed the next question। calculate the boiling point of benzene where the entropy and enthalpy of vaporization of benzene is 25 kilojoule per mole Kelvin inverse and 50,000 joule mole inverse respectively। here given क्या है, entropy of vaporization del S vaporization is given 25 किलो जूल। 25 किलो जूल को हम जूल पे कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे 25 इंटू 10⁻³ देन वी गेट योर 25,000 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। देन क्या गिवन है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डेल एच वेव इक्वल्स टू 50,000 जूल मोल इनवर्स। हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन। द फॉर्मूला इज एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन फॉर्मूला क्या है, डेल एस वेव इक्वल्स टू डेल एच वेव बाई टेम्परेचर एट ए बॉइलिंग पॉइंट। कैलकुलेट टेम्परेचर एट बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डेल एच वेव बाई डेल एस वेव। डेल एच वेव का वैल्यू क्या है 50,000, डेल एस वेव का वैल्यू क्या है 25,000। नाउ फाइनली वी गेट योर 2 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत आसान है, बहुत इजी है। पहले हम फॉर्मूला को याद करेंगे तो सब प्रॉब्लम्स अपनी आप हो जाएगा। ये थोड़ा सा फॉर्मूला को याद करेंगे, उसके बाद हम जरूर कर लेंगे सब प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम टाइप्स पहले हम पुट द फॉर्मूला देन गेट द आंसर। थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो पार्ट 3 का वीडियो आएगा। उस वीडियो में हम बॉन्ड एनर्जी का
उसके बाद हम चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का प्रॉब्लम करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।